much. The statement is that, do you support PDM as a progressive voter? So I'm going to talk about that. As a progressive voter, the Pakistan Democratic Movement is a tested, tried, confirmed, failed movements of anti-democrats. I mean, there is historical evidence. And I'll talk about first three things about them because that's the statement and I'm going to be talking about them. Number one, democracy or autocracy is a mindset. And if the mindset is non-democratic, no matter what you do, what system you bring in, you can manipulate it. And I think one of the biggest examples is the running example going on in American elections, that it has a 245-year-old democratic system. And look what's happening over there. We are far behind. And the 30 years, 35 years of democracy that we are talking over here in the 70-year rule that we have, why do people in Pakistan are so disillusioned? Why is the youngster like Ammar talking about all these things? And I can fully understand, because I am not a politician, right? I'm a reluctant politician. Nobody in my family has ever been a politician. I was teaching at LUMS. I was with World Bank. I am a journalist. I had no intent of ever coming into politics. Because the type of politicians that we had this set mindset in that, no matter what you do, these politicians are never going to have the benefit of Pakistan in their heart. And because they are so bad and so corrupt, they make the military look good. My analysis, and I've written a lot on it, even before I came into politics, was that the politicians in Pakistan, their performance, their mindsets are the key responsibility for conceding the space in politics. So number one, my case against PDM and their mindsets. They have a vaccine in their DNA which will never make them become democrats. They are autocrats in thinking. They are monarchs in behavior. And it is tested, tried, proven for 30 years. One came for 4 times. The other came 3 times. Right? Tell me one more incidence in democracy. Tell me one more. एक मुझे किस्सा बताएं जहां एक पार्टी का लीडर कहता है कि मेरी बीवी ने वसीयत में मुझे पार्टी दे दी है और वसीयत में मुझे सदर बना दिया है. कोई एक किस्सा मुझे बताएं कि मुझे वसीयत में दे दी है और ये जो मेरा टीनेजर बेटा है ये भी ताहयात अब चेयरमैन रहेगा. मतलब डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी, और उसके बाद आप उल्टा लटका दें उनको, आप उनके मेंटल ट्रांसप्लांट्स करा दें. यू कैन आस्क सम साइंटिस्ट एंड सम मेडिकल रेप आल्सो ऑन दिस. आप जो मर्जी कर लें, they cannot become anything else than worse than monarchs. एक पार्टी है और उस पार्टी ने, आपको पता है, 4 दफा हुकूमत में आई है. अभी सिंध में 12 साल से है. For 12 years they've been there. 12 years they've been there. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. सिंपल एग्जाम्पल.
of their performance. And I'm talking about the last 12 years. 5 years they were in the center and in the province, and 7 years they've been in the province. 38 नाले नहीं साफ कर सके, कराची के 38 नाले नहीं साफ कर सके. And guess what? Who called the army? They requested कि हमारी मदद नहीं कर रहे आप. आर्मी ने जाके साफ किए. I'm giving you a small example. Because why? KMC, KDC, सारे के सारे एक, you know, वो फुप्पी काम कर रही है as head of one, समधी काम कर रहा है. चाहे वो काम करे ना करे, उनको आता हो ना आता हो, वो 4 दफा आए, वो 5 दफा आए. अंदलीब अब्बास, मोहसिन दावर, अम्मार जान, जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हो, जितने मर्जी एफिशिएंट हो, कभी भी they will never have a chance of taking over the puppy and the samdi and the son and the daughter. Tested, tried, proven. The fish rots from the top. जब ऊपर बंदा गलत हो, नीचे जो बुरे वाले होते हैं, they survive and they are promoted. जो अच्छे वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं. बहुत से पाकिस्तानी हमारे आए. I can give you a million examples. Governor State of Bank, so many good people came under them. Brilliant people. Resign करके चले गए. And उनकी stories आप पढ़ लें, उन्होंने किताबें भी लिखी इनके बारे में. So that's the first thing. That if you've tested them for 30 years, you've tested the other party, they've been given turns. एक मैं कचरा, पानी, नाले, कोई चीज भी मैनेज नहीं कर सकते. ये तो आर्मी ने नहीं ना कहा कि आप 12 साल अपने नाले साफ ना करें. ये आर्मी ने तो नहीं कहा ना कि जी आप सिर्फ अपनी फुफ्फी को लगाएं जिसको के अलिफ बे नहीं आती किसी चीज की. ये तो आर्मी ने नहीं कहा. सेहत पे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी आप बिल्कुल कोई नया अस्पताल ना बनाए. ये तो आर्मी ने नहीं कहा कि जी आप बाहर जाएं, आपकी फैमिली को छींक भी आए तो आप बाहर जाएं. ये तो आर्मी ने नहीं कहा कि आप 1600 सिर्फ वेंटिलेटर छोड़ के जाएं इस पेंडेमिक में, और खुद आप तकरीबन, एंड आई एम इन द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये फिगर्स कोट हो चुके हैं. एक एक ट्रिप पे ये आर्मी ने नहीं कहा था कि आप 262 ट्रिप्स लें 5 सालों में, and out of those 42 trips are to UK and they are personal, where PIA planes have been converted into personal trips for children and maids. ये आर्मी ने नहीं कहा था कि आप पर्सनल ट्रिप्स पे जाएं और आप उसकी बजाय 1 करोड़ बच्चे को स्कूल में ना डालें. ये आर्मी ने नहीं कहा था. Right? So I have no background. I'm just like you people. I've taught in LUMS. आप सारे मेरे students हैं. I can relate to you. And I was also once sitting exactly like Ammar. I've been activist all my life. आपको पता है. You've seen me around. लाहौर बचाओ में मैं सबसे पहले निकली थी. वो जो थी चीफ जस्टिस की मूवमेंट में. My articles were the first ones to be banned. I was in the media ban list. 3 नवंबर को इमरजेंसी लगी थी और 2 नवंबर को मेरा आर्टिकल आना था कंट्री ऑन सेल. Dawn banned it. I was a regular writer on Dawn. I sent it to News. News banned it. Right? And then I decided that I can't just be a commentator, sit outside the cricket patch and make के जी ball swing इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है, ये D में नहीं जा रहा, goal नहीं हो रहा. I need to be in there, how bad I am, how inexperienced I am, how, and then contribute whatever I can.
बिकॉज सिस्टम चेंज करने के लिए अगर हम सिर्फ बातें करते रहेंगे तो वो सिस्टम, अगर आप अंदर होंगे मे बी ज्यादा, अगर आप ज्यादा पोजिशंस में जाएंगे तो ज्यादा, बट इट्स अ कलेक्टिव ड्यूटी कि द सिस्टम विच इज इम्परफेक्ट, फ्लॉड, वी हैव टू करेक्ट इट, बट वी विल ओनली करेक्ट इट if we are not the developers, promoters of a system which favors us. And when it favors us, we are okay with army, with autocracy, with whatever, with Kargil, whatever. But when it questions us, we become democrats. उससे पहले हम monarchs हैं और हम autocrats हैं. We attack the Supreme Courts. Physically attack the Supreme Courts. But जब वो हमें कहता है कि तुमने एक रसीद नहीं दिखाई, हम कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये 5 बुक्स से भरे हुए जजेस को निकाल के बाहर फेंको, फिर हम पीडीएम हो जाते हैं. जब हम जस्टिस कयूम को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेनजीर का केस है, जरा ऊपर लाना, और ये मुस्लिम लीग का बंदा है, इसको जरा नीचे करना, देन वी से कि जी कोर्ट्स ठीक है, डेमोक्रेसी है. जब वो कोर्ट हमें इश्तिहारी, भगौड़ा, मुजरिम, कॉन्विक्ट करार देता है, तब हम कहते हैं कि जी ये जमहूरियत को खतरा है. So when our definitions of democracy is कि if it serves me, the heir to the throne, the heiress to the throne, अगर उन पे केसेस हैं तो so the counter argument, I know you people will say कि जी आपके साथ भी वही बंदे आ गए, ठीक है ना. अब इनके पास सारे वो बंदे हैं, हमसे भी ज्यादा हैं बंदे, वो ये डिस्कशन टॉक शोज में बहुत हो चुकी है. Oh, my point is, look, what did I do? I took every case to the court, और मैं बहुत केसेस हारी. I said, okay, नवाज शरीफ ने ये किया है, मरियम ने ये किया है. I took the case to the court. लाहौर को जब रेप हो रहा था, environmental rape, I did cases over there. कि आपने क्या कर दिया स्मॉग को? Look at what has happened to Lahore's smog in the last. ये इन्होंने, आर्मी ने कहा था कि आप दरख्त काट काट के, आप लाहौर में दरख्त काट काट के आप टिम्बर माफिया बने, आप बेचें, आपने पार्किंग लॉट से लेके सबको ठेके दिए हुए. ये आर्मी ने कहा था कि आप नहर के गिर्द सारा जो है वो बेड़ा गर्क कर दें, आप रावी को सुखा दें. ये आर्मी ने कहा था कि आप जो अर्थक्वेक वाले पैसे हैं वो अपने दामाद को दे दें. ये आर्मी ने कहा था. I fought cases, you can see the legal history कि इन्होंने क्या किया किस दरख्तों को. And I also won the case. जो पीछे था 4 साल पहले के स्मॉग कमीशन बनेगा, और उसमें हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया. अब ये कहते हैं जी हमारे साथ करप्ट बंदे. मैं इनसे पूछती हूँ, ये धांधली हुई, हमारा मुकाबला उनसे नहीं है जो आए लेके आए. My question is, I went to the court with 460 petitions. I went to the tribunals. I published a white paper. I brought videos. I brought. इनको 2 साल हो गए, एक टूटा हुआ वीडियो नहीं आया इनके पास. Look at the petitions they filed in tribunals. जिन ट्रिब्यूनल्स में हम गए थे, मुझे 6 दफा I lost it. I lost so many times. I was harassed. I was beaten. आपको पता है, कभी आपने वो वीडियो देखी है, वो एविडेंस देखी है आपने? मैं एक प्राइवेट रोड पे जा रही हूं, इन्होंने मेरे पे गोलियां खोली. I was shot on straight on. I was taken to the jail, beaten up. Have you seen anything like this? कोई देखा है आपने इस केस का? और मैं आपको कई और, मैं अपना एग्जांपल देके, इट लुक्स लाइक आई हैव वो, लेकिन कई और एग्जांपल्स. मैं कैंपेन मैनेजर थी NA 120 पे, NA 125 डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां खड़ी थी. She was standing in a constituency which is the most difficult constituency in Pakistan, जहां कभी कोई नहीं जीत सकता. Nobody has ever won over there.
It's like लड़काना and 90 and 120. पाकिस्तान की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि खरीदी हुई हैं. हम गली में जाते थे, 2 औरतें, हमें कहा जाता था कि कितना देंगी आप, ये गली है 4.5 लाख की, 5 मकान है, बताएं. और फायरिंग की जाती थी हम पे. मैं इसकी बात कर रही हूं. ये आर्मी वाले नहीं वहां खड़े थे. ये आर्मी वाले नहीं वहां खड़े थे. हुकूमत उन्होंने, और वो अंदर से हमें कहते थे कि जी ये we like you. वहां में, you know, people used to meet. There are people like you and me who were there. So number 1 ये. Number 2, why the case to support a progressive party, because मैं तो वो जो आपने मुझे टॉपिक दिया था मैं उसको कह रही हूं. आप सोचें कि दोनों पार्टियां पैदाइश हैं मार्शल लॉ की. दोनों पार्टियां मेन जो हैं वो पैदा ही आर्मी की वजह से हुई. Bhutto was a foreign minister of Ayub Khan, and let me tell you, Bhutto साहब 71 से लेकर 73 तक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे. चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. And I'll also tell you from quote from history what he said about Fatma Jinnah. And I can quote, and क्योंकि मुझे पता है आप सारे रिसर्चर्स हैं, मैं बगैर रिसर्च के बात नहीं करती. उसके बाद एनआरओ किसने लिया? 4700 केस बंद करवाए मुशर्रफ के साथ मिलकर, दोनों पार्टीज ने. उस वक्त क्या हुआ? Why was Musharraf acceptable? And you know नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक कहता था मेरा बेटा है, ये कहते थे मेरा बाप है, और उसकी कब्र पे खड़े होके कहा कि जी मैं इसका मिशन लेके जाऊंगा, और फिर मुशर्रफ को एक्सेप्ट किया. एंड इन द लेटेस्ट पीडीएम उन्होंने खुद माना है, नवाज शरीफ ने खुद माना है, यू कैन रीप्ले दैट, कि हमेशा से पाकिस्तान में हम मैनेज्ड इलेक्शंस के साथ आए हैं. सो माय क्वेश्चन इज, अगर 4 दफा पीपल्स पार्टी मैनेज्ड इलेक्शंस के साथ आई है एंड 3 दफा पीएमएलएन आई है, जो कि वो मान रहे हैं पीडीएम के जलसे में, तो इस दफा क्या प्रॉब्लम हो गया? Just because they didn't win elections and this time the army did not want to support them, in their words. अब उनकी जमहूरियत जाग गई है. Ma'am, we're running a little short on time, so okay, I'll just say one. So their conduct, behavior, history, DNA, mindset, ये सारा anti-democratic है. No progressive voter can even look at them for democracy. And याद रखें, परफॉर्मेंस पे आ जाएं. आप 2 चीजें प्रिपेयर करें. डेमोक्रेसी होती है फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट. आप कंपेयर कर लें, जब ये पार्टियां आई इनके एसेट्स, और अब इनके एसेट्स कहां हैं, और पाकिस्तान के एसेट्स कहां थे, और पाकिस्तान के एसेट्स कहां चले गए हैं. डू एनी एनालिसिस एंड यू विल फाइंड आउट पॉवर्टी लेवल्स. यू टॉकिंग अबाउट 2, मैं आपको पता है मैं मदर चाइल्ड एक्टिविस्ट हूं. पाकिस्तान हैज इन लोगों ने 10 साल में एसडीजी गोल देखे, एमडीजी गोल देखे. More mothers die in Pakistan than anywhere in the world. More children die. Infant mortality rate, maternal mortality. मेरा सर झुक जाता है शर्म से, क्योंकि इनकी माएं और इनके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने और बाहर जाते हैं इलाज करने. And if you want to talk about what we are doing in these areas, ठीक है, हम 2 साल पुराने हैं. And I can tell you that 5 years in KP, 2 years, 3 years, we were also branded. We haven't done everything. There are a lot of flaws, but there's no shortcut to correcting a system. There's no shortcut to it. Any progressive voter will vote for your party, Ammar, maybe, but will not vote for these people. मैं बता रही हूं, will not vote for these people. जो मौलाना ने कहा हुआ है कि औरतें नहीं आ सकती, बेनजीर नहीं आ सकती, I will not let her come because she's a woman. Do you think कि ये कोई बातें हैं
कि नहीं जी अब कॉमन देयर इज ओनली वन कॉमन मिनिमम एजेंडा। आज आर्मी मान जाए और उनके केसेस बंद हो जाए। जुबैर 2 दफा गया है उनके पास, ख्वाजा आसिफ ने रात को फोन किया कि मुझे जिता दें। 2 दफा गया आर्मी के पास, अभी भी 4 weeks ago, and you think that they're going to change? No, it's just blackmail. That's all. No progressive worker. You've got evidence, you've got research, mindset, skill set, tool set, tested, tried, failed. जो अब उनको वोट देगा और इनकी मूवमेंट में जाएगा, वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उसी तरह तबाह होता रहे जिस तरह पिछले 30 साल में।